Okay, let's start with the main part of the chapter, that is linear simple harmonic motion. As I told, the chapter is divided into two parts, that is linear simple harmonic motion and angular simple harmonic motion. Now if you are expecting question on linear simple harmonic motion, then under this topic, first question can be define linear simple harmonic motion, or the question which I have written over here will come to this question once I complete this part. Okay, one thing which you should keep in mind is you will never get a separate 1 mark question like define linear simple harmonic motion. This definition will always be with the derivation, like define and derive. Okay, you will never get only 1 mark question as define linear simple harmonic motion. Always this definition will be along with the derivation. Okay, is it clear? So whenever you read the question, read it properly, because this define part we tend to ignore it. It is not proper ignorance. What happens is वो part हम देख ही नहीं पाते और हम direct derivation पे चल जाते हैं. अच्छा, derive, what is asked to derive? Okay, define, okay, ठीक है, what is asked to derive, and then we don't focus on that define part and then we lose 1 marks. Okay, so let's see what is there in it. Okay, one more thing which I wanted to mention is when you are writing definition, write exactly what is there in it. You cannot write explanation when definition is asked. Okay, because if you are writing explanation, you will not get marks, you will lose your marks. So first understand what is there in it. First important word is linear. Since it is linear, definition of linear simple harmonic motion, you will start with linear, and this linear simple harmonic motion is periodic. So you can directly write linear periodic motion, of course, of a body. Linear periodic motion of a body. What is happening in this? In which, okay, when a body is performing linear periodic motion, in which either you write about force or acceleration, it is okay. It is not necessary to mention about both the terms. So I think you can, if you want to write both, you can. If you are writing only about force, it is okay. Okay, what happens in linear periodic motion? Force is always directed towards the mean position. Okay, force or acceleration is always directed towards the mean position. Mean position is the original position or equilibrium position of the body when no force is acting on the body. Okay, agar jaise now my pen cap is kept at this position, no force is acting on it, so this is its mean position. This is its original position. Okay, once by applying force, if I change its position, now this is not its mean position. So mean position is a position when where there is no force acting on the body. Okay, so the force is always directed towards the mean position, and now we have discussed about direction. Force is a vector quantity. So we will have to talk about two things. एक तो डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे और हम मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे. तो हमने डायरेक्शन के बारे में बात कर दिया. डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? नाउ इट्स मैग्नीट्यूड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is directly proportional. Now it is just written proportional, means it is directly proportional to what? Means my force is directly proportional to displacement, and the displacement is done from the mean position. Means the body was kept at mean position. Miss mean position से उस body को हमने किसी एक particular position पे displace किया, मतलब ले जाके रखा. तो displacement और force एक दूसरे को directly proportional है. Displacement ज़्यादा हुआ मतलब force ज़्यादा. With this both are directly proportional. तो हमने magnitude की बात कर ली. Magnitude is nothing but just the numerical value. You are talking about just the number. तो यहाँ पर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और डायरेक्शन की बात करो तो फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. सो होप यू अंडरस्टूड द डेफिनेशन, एंड नाउ यू कैन जस्ट मेमोराइज द डेफिनेशन इन 1 minute, बिकॉज यू अंडरस्टूड व्हाट इज देयर इन द डेफिनेशन. सॉरी, डेफिनेशन में दो चीज़ है, फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो एक बार स्टार्ट से देख लेता है. Force is always directed towards the mean position, and the magnitude of force is directly proportional to the displacement, and the displacement is done from the mean position. Okay, now let's come to the question which comes under this topic. Show that acceleration is proportional to displacement. Now, okay, now here they are asking you to show that acceleration
is proportional to the displacement. Okay, acceleration is proportional, means directly proportional to the displacement. If I say x is the displacement, okay, this is what they are asking us to prove in first line. And the direction, its direction मतलब direction of acceleration is opposite to that of displacement. मतलब अगर displacement इस direction में है तो acceleration इस direction में होगा. Okay, if displacement is in this direction, so acceleration is going to be in the opposite direction. अब दोनों directions अगर opposite है तो physics में opposite directions हम कैसे बताते हैं? By introducing a negative sign. So this is what they are asking us to derive. समझा? So let's see how you will start. अब drawing is important and मेरे तरह नहीं draw करना, पेंसिल स्केल लेके प्रॉपर ड्रॉ करना. तो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वही कंटेंट, उतना ही कंटेंट अगर तुमने पेपर में लिखा यू विल गेट फुल मार्क्स. सपोज दिस इज आस्क्ड फॉर 3 marks, you'll get 3 marks. If it is asked for 2 marks, you'll get 2 marks. So whatever is there in my notes, you can blindly refer. Okay, let's start. Consider a rectangular block and it is placed, consider a rectangular block is placed on a smooth frictionless horizontal surface. Now this is very important to mention कि जो हमारा surface है वो smooth है और frictionless है और वो horizontal है. Horizontal मतलब this is horizontal and when it is vertical then this is vertical. Horizontal means you are working only on x-axis. Vertical means you are working on y-axis. Simply understand it in this way. तो हमारा एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है. ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? वन एंड ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, इज अटैच टू द रिजिड वॉल. ओके, एक स्प्रिंग लेकर आ गया, स्प्रिंग के एक एंड को हमने रिजिड वॉल से लगा दिया और दूसरा एंड जो स्प्रिंग का है वो हमने ब्लॉक को लगा दिया. एंड द मास ऑफ द ब्लॉक इज स्मॉल एम. चलो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ. इफ यू आर नॉट राइटिंग दैट इन स्टेटमेंट, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पर हम मेंशन कर दे रहे हैं. अब यहाँ पर 3 फिगर मैंने बनाया, फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी. फिगर ए में द बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन, और यू कैन ऑल्सो से दिस इज द मीन पोजीशन. मतलब सेंटर वाला जो पोजीशन है दैट इज मीन पोजीशन एंड एट दिस मीन पोजीशन देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. दैट इज व्हाट वी विल राइट. In figure A, block A or the block is at mean position, therefore no force is exerted. Now who is exerting force on the block? Spring, of course, because block is attached to the spring. Can you see any other thing which is attached with the block? No, it is only the spring, right? So no force is exerted by the spring on the block because the block is at mean position. So here we have discussed about figure A. Now let's talk about figure B. What you can see in figure B. Now what is done in figure B? ब्लॉक को यहाँ से पकड़ा और हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस. नाउ इफ यू सी दिस साइड इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस साइड इज नेगेटिव एक्स एक्सिस. तो हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस इज एक्स. ओके, एंड टूवर्ड्स विच साइड? टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. सो वी विल कॉल दिस एज positive extreme. Okay, now in this case the block or the spring is stretched, so you can write it over here. Okay, ये भी मेंशन कर दिया हमने. डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्टेंस हुआ फ्रॉम मीन पोजीशन से कहाँ तक डिस्प्लेस हुआ? इस पॉइंट तक. और हमेशा देखो मैंने ब्लॉक के सेंटर से ही लाइन बनाई है, ना ब्लॉक के इस एंड से ना ब्लॉक के इस एंड से. ब्लॉक के सेंटर से हम पॉजिटिव एक्सट्रीम मार्क कर रहे हैं, ब्लॉक के सेंटर से हम मीन पोजीशन मार्क कर रहे हैं. तो ब्लॉक के इस मीन पोजीशन के सेंटर से लेके इस मीन इस सेंटर पोजीशन से हमारा डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स. मैंने ब्लॉक को पकड़ा और टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम मैंने ब्लॉक को स्ट्रेच कर दिया, मतलब स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया. As soon as I leave the block at this position, what is going to happen? The block is going to go back, try to go back to its original position. लेकिन वो original position पे जाने से पहले oscillate करेगा, right? It will come here, then again it will pass its mean position, it will come a bit forward. ऐसे to and fro positions करने के बाद after some time it will come back to its mean position. But basically first step, as soon as I leave it from here, what is going to happen? The block will try to move in the backward direction, not in the forward direction. It is going to go back in the backward direction. Block is attached to the spring, so in this case spring is exerting a force on the block because of which the block will go towards the backward or in the backward direction. समझा?
तो फिगर बी में क्या हो रहा है, ब्लॉक इज डिस्प्लेस टूवर्ड्स इट्स राइट, ब्लॉक को राइट साइड से, मतलब ब्लॉक के राइट साइड पे ब्लॉक को हमने डिस्प्लेस किया, मतलब वहाँ से उसको उठा के हमने उसके राइट की तरफ ला के रखा from equilibrium position या from mean position. Then what is going to happen? Then force is exerted by the spring on the block and that force is towards the left. हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस किस तरफ किया, राइट तरफ. स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट कर रही कौन सी तरफ, लेफ्ट तरफ. समझा? So what can I say in this? Force which is exerted by the spring is directly proportional to the displacement. या ऑफ कोर्स इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? क्योंकि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं ब्लॉक को यहाँ से ज़्यादा दूर तक खींच के लेकर आती हूँ तो उतने ही फोर्स से मेरा ब्लॉक पीछे जाएगा, राइट? तो जितना अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा ब्लॉक पर बाय स्प्रिंग. तो ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए. बट नाउ लुक एट द डायरेक्शन अपोजिट, राइट? सो हियर यू विल मेंशन दिस एंड जस्ट लुक एट द स्टेटमेंट इन फिगर बी. ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स इट्स राइट from equilibrium position and then the force exerted, then there is force exerted by the spring on the block and that force is towards the left side. So it is very easy to write. You can write this thing in your own words. Now this force is also known as spring force or restoring force. Why restoring force? Because this force is trying to restore the position of the block, trying to take the block back to its original position. So I have mentioned that the force which is exerted by the spring is known as spring force or restoring force. Now again, here I have also mentioned if x is the displacement, then restoring force F is, I have written this equation. So you should write such things. How will the examiner or the paper checker will come to know displacement? What is the displacement? So I have mentioned, see, x is displacement. Restoring force is denoted by small f. So I wrote this equation. Negative sign indicates what? I know what this negative sign indicates. I have explained this in my video, but how you will explain that to the examiner or the paper checker? तो बताना पड़ेगा कि negative sign क्या indicate करती है कि f और x दोनों opposite direction में हैं. ठीक है? Now if I want to remove this proportionality sign, I'll have to drop a constant on right hand side, that is k, and that constant is k is a constant and k is also called as force constant. Okay, and the value of k depends on what? It depends upon the elastic properties of the spring. अब तुम spring कोई भी मटेरियल का यूज़ कर सकते हो, हर मटेरियल का इलास्टिक प्रॉपर्टी अलग होता है. तो ये k का वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा. ठीक है? So k का वैल्यू depends upon elastic properties of the spring. Now this is very minor thing to remember, but you will have to remember because you can get a question, MCQ question. तो ये MCQ क्वेश्चन आते हैं हमारे टेक्स्ट बुक में से ही, लेकिन हम ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में नहीं रखते. ठीक है? सो रिमेंबर दिस दैट द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग. नाउ हमने फिगर बी डिस्कस किया और इक्वेशन 2 डिराइव किया. व्हाट इफ आई डिस्कस फिगर सी? फिगर सी में हमने क्या किया, स्प्रिंग को. नाउ अगेन कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन. ओरिजिनल पोजीशन से मैंने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दिया और नेगेटिव साइड डिस्प्लेसमेंट किया. सी दिस टाइम आई एम गोइंग टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन. सो दिस बिकम्स माई नेगेटिव एक्सट्रीम. ओके, and this side is my displacement. Now in this case, as soon as I leave the block, will the block move towards the backward or forward? Of course forward. सबके दिमाग ने बोला होगा, जो वीडियो देख रहा है सबके दिमाग ने बोला होगा, नहीं मैम, of course the block is going to move in the forward direction and that force is exerted by whom? By spring on the block. And force and displacement, both of them are going to be proportional. जितना डिस्प्लेसमेंट उतना फोर्स लगेगा स्प्रिंग की वजह से. दैट इज स्प्रिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स. नाउ इफ यू लुक एट द डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अलग, सेम इक्वेशन डिराइव होएगा. अगर मैं फिगर सी के बारे में बात करूंगी तो येस. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग, यू कैन सिंपली राइट इन योर ओन वर्ड्स दैट सिमिलर इक्वेशन विल बी डिराइव्ड फ्रॉम फिगर सी. नाउ लेट्स फोकस ऑन एक्सेलरेशन. What will be the acceleration of block? Now we know the formula, very basic formula which was given by Newton's second law, that is force is equal to mass into acceleration. So what is the formula of acceleration? That is force upon mass, which I have written over here. We have the formula of force in equation 2, just substitute that. I have written that is from equation 2. Now k is a constant, mass will also remain constant, mass of the block.
So instead of k upon m, I am writing constant. See, I have written, since k and m are constant, so instead of writing k and m, I'll directly mention this as constant. So a is equal to minus constant into x. A is equal to minus constant into x. What if I remove this constant? Then the equal to sign will convert into proportionality sign. बराबर? Constant निकाल दिया, equal to की sign की जगह आ गया proportionality sign और minus x as it is जो था वो लिख दिया. Now if you look at equation 1 and equation 2, equation 1 is force is directly proportional to displacement. Acceleration is directly proportional to displacement. बराबर? See, from equation 1 and 2 we came to know that force and acceleration both are directly proportional to displacement. Now let's talk about direction because दोनों के पास negative sign है. equation 1 में भी और equation 2 में भी. कहाँ गया? हाँ, sorry, ये वाले equation में भी, that is, sorry, I should have mentioned is that as equation 3. So equation 1 and equation 3 दोनों equation में negative sign है, मतलब उनका direction opposite है. So I have written both मतलब force and acceleration both are directed opposite to the displacement. So let's come to the diagram. तो इसका मतलब displacement इस तरफ है, restoring force is acting towards left side, so we can also write an acceleration is also acting towards left hand side. When displacement is towards left hand side, force is towards right hand side, so acceleration will also be towards the right hand side. Now if you notice, displacement हम positive extreme की तरफ करें या displacement हम negative extreme की तरफ करें, force and acceleration दोनों सबसे पहले mean position की तरफ जा रहे हैं. फर्स्ट केस देखते हैं. डिस्प्लेसमेंट जब मैंने पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ किया तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन दोनों किस तरफ जा रहे हैं? ये रहा हमारा मीन पोजीशन, टुवर्ड्स मीन पोजीशन. लेट्स लुक इन दिस केस. जब हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से जब हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट किया नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, तभी भी फोर्स एंड एक्सेलरेशन किस तरफ जा रहे हैं? ये रहा मीन पोजीशन की तरफ. सो कैन आई से दैट सिंपल वर्ड्स में force, difficult for me to write like this, still I'll write. Force and acceleration both are directed towards mean position. So you understood. You can also get a question. Either you can get a question on this statement or on this statement. So now you understood how questions are framed? Okay, thank you.